Hello everyone, welcome to Sword of Sir classes. This is the question number 39 from gate 2026. Okay, this is the infinite series. So on which one of the following domain does fz represent an analytic function? Okay. So for defined a function, the series summation of n 1 to infinity 5 to the power minus n cos nz should be convergent because infinite series cannot define a function, cannot define it. So फॉर एफ जेड को अगर फंक्शन पहले होना है, पहले तो फंक्शन होगा, फिर तो हम उसके एनालिटिक फंक्शन होने का रीजन फाइंड करेंगे. पहले फंक्शन होने के लिए इस इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा. अगर ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, दैट मीन्स द सीरीज विल कंटिन्यू आफ्टर इनफाइनाइट नंबर इनफाइनाइट टाइम. सो देन वी कैनॉट से एफ जेड एज ए फंक्शन. तो अगर फंक्शन होना पड़ेगा तो दिस सीरीज को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा. और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ये क्राइटेरिया है फॉर टू डिफाइन ए एनालिटिक फंक्शन. द फंक्शन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज शुड बी कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली. सो हम लोग को इस सीरीज को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और सिंपली कन्वर्जेंट किस एरिया में हो रहा है उस एरिया को अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो उस एरिया में हम लोग बोलेंगे कि दैट फंक्शन रिप्रेजेंट ए फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज ए एनालिटिक फंक्शन. सो पहले एनालिटिक होने के लिए तो इस फंक्शन को हम लोग को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा. सो हम लोग इसको कन्वर्जेंट कैसे कहेंगे? कंपैरिजन टेस्ट is the one of the tool to use here. So mod of 5 to the power minus n cos 9. So पहले हम लोग cos 9z को एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखेंगे. So cos nz equals to e to the power inz plus e to the power minus inz by 2. So therefore 5 to the power minus n cos nz can be written as 5 to the power minus n into e to the power inz plus e to the power minus inz by 2. So mod of 5 to the power minus n cos nz. This is can be written as mod of 1 by 2 5 to the power minus n e to the power inz plus 1 by 2 5 to the power minus n e to the power minus inz. Okay. Now, so mod of, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? mod of 5 to the power minus n cos of nz which is less than equals to 1 by 2 mod of e to the power nz by 5 to the power n plus 1 by 2 mod of e to the power minus inz by 5 to the power n. Okay. So therefore summation of 5 to the power minus n cos nz. So हम लोग mod लेंगे. So this is less than 1 by 2 summation of mod of e to the power iz by 5 to the power n plus 1 by 2 summation of mod of e to the power minus iz by 5 to the power n. Okay. So for the convergent of this part, we know that let a equals to e to the power iz by 5. तो हम लोग और एक तो स्टेप करेंगे. सपोज a equals to e to the power iz by 5. अगर दिस इज अ जियोमेट्रिक सीरीज, बोथ आर जियोमेट्रिक सीरीज, अगर इसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा सो मॉड ऑफ ए को लेस देन 1 होना पड़ेगा, अदरवाइज जियोमेट्रिक सीरीज कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा. सो अगर मॉड ऑफ ए को लेस देन 1 होना पड़ेगा सो मॉड ऑफ e to the power iz को लेस देन 5 होना पड़ेगा. So mod of e to the power iz means I
x plus of iy, so less than 5. So this imply e to the power minus y plus ix, this mod should be less than 5. So what we will get? We will get e to the power minus y should be less than 5. This imply e to the power y should greater than 1 by 5. E to the power y. Yes, so therefore, which implies, और इस स्टेप को हम लोग अगर कैंसिल करें, so it can be written as, so minus y should be less than ln 5. Okay, therefore, which implies y should be greater than minus ln 5. So what is y? Y is imaginary z. So imaginary z should be greater than minus ln 5. We name it, this is 1. And another geometric series for this e to the power minus iz. So let b equals to e to the power minus iz by 5. So this is also geometric series. इसको अगर convergent होना पड़ेगा तो mod of b should be less than 1. So mod of b should be less than 1, which implies mod of e to the power minus iz by 5 should be less than 1. So this implies mod of e to the power minus I, z means x plus of iy. Okay, this should be less than 5. So this implies mod of e to the power y minus ix should be less than 5. अगर mod हम लोग उठाएंगे तो ये आएगा e to the power y should be less than 5. So this implies y should be less than ln 5. Now what is y? Y is nothing but imaginary z. So imaginary z should be less than ln 5. So combining 1 and 2, what we will get? We will get that minus ln 5 should less than imaginary z less than ln 5. And this is the desired location where the function will convergent, and the convergent function will set an analytic function. So the area is this. So इसको अगर हम लोग modify करके लिखेंगे, the mod of imaginary z should be less than ln 5. So this is our required portion or required area. तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है. Mod of imaginary z should be less than ln 5. Real. Okay. So option A is true. So option A is true. This is the answer. Thank you.